Welcome to Bibaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक द मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया का जो मेजर रिवर्स होता है लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और साउथ इंडिया का जो डिफरेंट रिवर्स है लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा और तापी. ये सब रिवर्स जो है, ये सब रिवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैसे ये रिवर्स कहाँ से फ्लो करता है, ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे. सो पहले हम लोग एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं इंडिया का. उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे. ओके, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने में हम लोग प्रोसीड करेंगे. ओके, so roughly this is the map of India. Now there are two major type of river systems in India. One is Himalayan river system and another one is peninsular river system. Roughly, if we divide, then this is the line that is the division line between uh, Himalayan river system and peninsular river system. Now in Himalayan river system we have some Indus, Chenab, Jhelum, Bias, Sutlej, etc. And here we have Ganga that flows through UP, Uttarakhand, Bengal, and enters the Bangladesh. And here we have the ब्रह्मपुत्र. यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है जो बाद में बांग्लादेश के अंदर गंगा के साथ मर्ज होता है. ओके, एंड सदर्न इंडिया में पहले हम लोग के यहाँ पे है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. एंड हियर वी हैव नर्मदा, तापी, Sabarmati, Mahi, etc. So these are the major rivers of northern India and southern India. Now in peninsular India we have different types of rivers, and in northern India we have different types of rivers. Basically इन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इन लोगों का जो टाइप्स है, इनहेरेंट नेचर है, वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एरिया. बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया का जो रिवर्स है और दी हिमालयन रिवर सिस्टम, दीज आर दी पेरेनियल रिवर्स. बिकॉज ये जो रिवर्स है ये ग्लेशियर से क्रिएट होता है या फिर ग्लेशियर जो मेल्ट वाटर है उन लोग वो वाटर से ये सब रिवर्स ओरिजिनेट होता है. सो दीज वाटर गेट्स these rivers get water quantity throughout the year. Okay, so these all are the perennial rivers. And on the other hand, the southern Indian rivers we have the non-perennial rivers. Maximally they are rain-fed rivers. That means during the monsoon period or during the rainfall time, the water quantity is maximum. Okay, now in the northern India or Himalayan river system, here we have two types of rivers. One that is Indus, and second one is the Ganga and Brahmaputra. Indus river generally through Pakistan flows into the Arabian Sea, and in the Ganga and Brahmaputra flows to the Bay of Bengal. Okay, so there are majorly there are two river system or river networks: Arabian Sea network and Bay of Bengal network. Now, Indus, a small part within India, and its other tributaries like Bias, Chenam, Jhelum, Ravi, Sutlej, these all are the different tributaries of Indus. They are only confined in the northern India. मतलब जो northern India हम लोग का है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया में हम लोग का जो इंडस रिवर सिस्टम है, उन लोग का उन रिवर्स का जो एरियाज है वो कंफाइंड है. On the other hand, when you have the Ganga river system, okay, or the Ganga river drainage basin, ये जो रिवर का एरिया है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल होके अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में वो डिबाउच होता है या फिर मिलता है. नेक्स्ट फॉर ब्रह्मपुत्र, ये रिवर तिब्बत, जो तिबेटियन, चाइना का जो तिबेटियन पार्ट है वहां पे ओरिजिन होके थ्रू आउट द रीजन फ्लो करके अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर होता है, एंड फ्रॉम असम इट अगेन एंटर्स द बांग्लादेश. ओके, so this is one part, Brahmaputra, a very small part within India, and with only a very small part of Indus within India. India, and maximum portion of northern India is covered by Ganga and its tributaries and distributaries.
For southern Indian rivers, we have two types of India. One is two types of rivers. One is east flowing rivers. Another one is west flowing river. मतलब यहाँ पे दो टाइप का रिवर हम लोग को देखने के लिए मिलता है. एक जो ईस्ट फ्लोइंग है और एक जो वेस्ट फ्लोइंग है. नाउ ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर है, या इन लोग का जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से ज्यादा होता है. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का जो नेचर होता है मेनली यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हम लोग को दिखाई देता है. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मेनली प्लेन रीजन से फ्लो होता है. सो इसमें क्या होता है, सिल्टेशन कैरी और सिल्ट बहुत ज्यादा होता है. कंपेरेटिवली वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो एक नैरो रीजन में होता है, नैरो रीजन से फ्लो होता है, और इसका जो टोटल लेंथ होता है वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स से कंपेरेटिवली कम होता है. सो द सिल्टेशन और सिल्ट कैरी इन comparatively less in the west flowing rivers. Now, there are some basic differences between Himalayan river network and peninsular river network, or Himalayan river systems or peninsular river systems. In Himalayan river systems, you can observe the meandering river course or the oxbow lakes, okay, or floodplain, formation of floodplain. But in southern Indian rivers, we cannot observe this type of landform. Southern Indian rivers में हम लोग को ये टाइप का landform नहीं दिखाई देता है, क्योंकि साउदर्न इंडियन रिवर्स जो होता है वो मेनली हार्ड रॉक एरिया से फ्लो होता है. ओके, यहाँ पे जो इरोशन होता है ये कंपैरेटिवली द अमाउंट ऑफ इरोशन इज कंपैरेटिवली लेस compared to the Himalayan river networks. In Himalayan river networks, we can see this type of in Himalayan river system we can observe this type of formations. Number one is gorges, that these are the narrow deep valleys in the mountainous ranges. That means हम लोग कोई भी रिवर अगर हम लोग देखें like Indus, Ganga, या Brahmaputra, or in our region Tista, we can see deep gorges and canyons. Okay, so these all are the mainly characteristics of mountainous regions where due to the deep undercutting, बहुत ज्यादा अंडरकटिंग की वजह से ये गॉर्जेस या फिर जो कैनियंस है वो फॉर्म होता है. नंबर टू, यहाँ पे हम लोग को फ्लड प्लेन, यहाँ पे हम लोग को फ्लड प्लेन दिखाई देता है. व्हाट इज फ्लड प्लेन? फ्लड प्लेन इज द सिंपली द रीजन विच गेट्स फ्लडेड एवरी ईयर. मतलब ये वाला रीजन जो होता है रिवर के दोनों साइड रीजन पे जो मोस्टली एवरी ईयर ये फ्लडेड होता है, या फिर मोस्ट एवरी ईयर यहाँ पे हम लोग को फ्लड दिखाई देता है. एंड दिस फ्लड प्लेन कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स. यहाँ पे जो सॉइल हम लोग को दिखाई देता है वो टू टाइप्स पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. वन इज खादर, अनदर वन इज भांगर. Khadar is the newer alluvium, more fertile, and Bhangar is the older alluvium, comparatively less fertile. Now, second one, third point is meander. Meander means it is the curvy nature of the river course. That means the river plain region से flow होता है वो बहुत ज़्यादा curvature way में flow होता है. So that is the meander. And fourth point is delta, formation of delta. Formation of delta. That means delta is comparatively newer landform. Okay, in the old stage of river or the lower course of river we can observe the delta. Delta is simply the sedimentation in the river mouth. जहाँ पे river ocean के साथ meet होता है वहाँ पे ये delta formation दिखाया जा सकता है. Now, what are the characteristics of peninsular river system? Number one is स्ट्रेट रिवर कोर्स. जहां हम लोग को हिमालयन रिवर्स में डेंड्राइटिक पैटर्न या फिर मेंडरिंग पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है वहां में हम लोग को सिर्फ स्ट्रेट रिवर कोर्स दिखाई देता है. अगर हम लोग देखें नर्मदा रिवर के केस में, नर्मदा रिवर जहां से फ्लो रहा है, जो नर्मदा रिवर का जो फ्लो रीजन है वो एकदम मोरलेस स्ट्रेट है. ओके, देयर यू कैन ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ बेंडिंग और सम काइंड ऑफ कर्वेचर, बट द अमाउंट ऑफ plain region or straight line or straight flow path is very much common in Narmada river. Number two, formation of estuary.
What is estuary? Estuary is a simple narrow opening of river on the ocean. Okay, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है या फिर पेनिनसुलर रिवर्स है, यहाँ पे the amount of sediment or the sedimentation is comparatively less compared to the Himalayan river system. That's why in the um, peninsular region we can observe the formation of estuary. Estuary हम लोग हिंदी में उसको खाड़ी भी बोलते हैं. So the formation of estuary. Now in the west flowing rivers we can observe westuary, and east flowing rivers we can observe the formation of delta. Now these are the basic characteristics of Himalayan rivers and peninsular rivers. Now beside this we have another type of river that is known as इनलैंड रिवर, मतलब जिसका ओरिजिन एंड एंडिंग दोनों एक ही लैंड मास के अंदर होगा. सो दैट इज नोन एज इनलैंड रिवर. वी हैव हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, एंड दैट इज इनलैंड रिवर system, that is origin and ending both are in the plain region or in the inland region. Luni in Rajasthan is one of the example of inland river system in India, which is originated near Mount Abu and goes up to Kutch of Rann in Gujarat. Okay, thank you. Thank you for learning with Bibaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.